So hello students, ଆଜି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର differential equation ଶିଖିବା ଯାହାର ଆମେ series solution କାଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି. That's the differential equation is called Legendre differential equation. It is of the form 1 minus x square b square y by dx square minus 2x dy by dx plus n into n plus 1 into y equals to 0. Now these differential equations we have solved in Fourier using Frobenius method. For that we first check px is x equals to 0 a regular point, or if there are some irregular points. So we check that px is equals to minus 2x by 1 minus x square and qx is this. Notice that at x equals to 0, it's a ordinary point because px is not infinity, qx is also not infinity. And at x equals to plus minus 1, it is a regular singular point. So the solution will be of the form x to the power m a k x minus a. Here this will be either plus or minus 1 to the power k. So this is the series we had taken in Frobenius method. And for x equals to 0, there will be a ordinary point. So for x less than plus minus 1 in this range, for x equals to less than plus minus 1, this is y, this is x minus 1 and plus 1. In this range, there will be a series we can write of the form akx to normal series. We can take a normal akx to the power k because it is an ordinary point. We can define a series here. And for this region, we will define another series here. So instead of doing that, also notice that x equals to plus minus infinity is also a irregular singular point because it is at infinity we are talking about. So for x, and we know for x greater than 1, when for larger value of x, a series will only converge for its negative powers. It will not converge for its positive powers but negative powers of x. So we assume a series of the form x to the power m a k x to the power minus k. So I took here negative series. So y is equals to a k x to the power m minus k. This is a descending series in Frobenius term because there will be points x equals to plus 1 and minus 1 because we are coming from infinity. So for these points, this series will also be true, and for this range minus 1 to plus 1, it will be also here. So instead of doing these two solutions, we can use this infinity at infinity term, and we will go with this series. So the recurrence, now we will find y dash, y double dash, then we will find the recurring equation, or the recurring relation, we will get this. Now since this is a descending series, we will put k equals to 0 on the highest degree polynomial. So our initial equation becomes n plus 1 and all this. Now by solving this, I get m equals to n or n equals to minus n plus 1. So for these two values, we will get different series. For m equals to n, we will get a series, and for m equals to minus n plus 1, we will also get a series. We will see that at x equals to plus minus 1, one of the series in the solution will be 0. Then other series will continue and it will not be it will not blow up to infinity at x equals to plus minus 1. So hello students, आज हमें आउ गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करियो जिबा जाउ को आजा लेजेंडर पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन और तार जो सॉल्यूशन गुडा अछि ताकू को आजो लेजेंडर पॉलिनोमियल. सो ए डिफरेंशियल इक्वेशन ई फॉर्म में जो रहथो 1 x square d square y by dx square minus 2x dy by dx plus n plus 1 n into n plus 1 y is equals to 0. एई बेले जेतबेले हमर फॉर्म पळे आसला गोटे डिफरेंशियल इक्वेशन रो हम जो कहबे लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन एबे सॉल्व करियो गेले. नाउ अगर to solve this, what we do is we find the singular points or the ordinary points. We will see which points are ordinary and which points are singular points. If it is singular, then is it regular singular or irregular singular? We have to check this. So to check that, we find px here is minus 2x by 1 minus x square.
qx n into n plus 1 by 1 minus x square. Notice that x equals to 0 is an ordinary point. Since it's an ordinary point, its solution can be of the form of y is equals to a k x to the power k. Normal series we are taking a normal Taylor series. But at x equals to plus minus 1, this px and qx goes to infinity, and we will see that x px and x square qx will be finite. So this is a regular singular point, x equals to plus 1 and minus 1. So this series y is equals to a k x to the power k will blow up at x equals to plus 1 and minus 1 at these points. So in this region, we can define a series like that, but in at x equals to plus 1 and minus 1, we have to define a Frobenius series, because these are regular singular points. So I took y is equals to x to the power m, a k x minus a to the power k. So here a is plus minus 1. Here I can put plus 1 for one series and minus 1 for other series. This part I will take minus 1, for this part I will take plus 1. Also notice that x equals to plus minus infinity is also a regular singular point. Let time go to regular singular point. Puta x equals to infinity. किंतु x equals to infinity कहବାକୁ गले हम बुझे कि larger numbers of x. एबे larger number of x केतेबेले कन्वर्ज करियो सीरीज गुडा जेतेबेले पावर गुडा कोन हो ना नेगेटिव पावर x से जे यदि mod x is greater than 1 माने बहुत लार्ज नंबर नबा ताले से सीरीज टा केतेबेले कन्वर्ज करियो ना जेतेबेले नेगेटिव पावर से x तो जेहेतु एडा रेगुलर सिंगुलर पॉइंट तो मैं एठी कोन करबो ना फ्रोबिनियस सीरीज टे डिफाइन करबी x टू द पावर n आ a के एठी नेगेटिव पावर तो एटा गोटे की सीरीज हेगला डिसेंडिंग सीरीज एबे कोन करिया अछि हमहु ना एबे हमहु वी हैव टू डू व्हाट एबे कोन करिया ना हमें y डैश काढिया y डबल डैश काढिया पुनी डिफरेंशियल इक्वेशन रे पके आ रिकरिंग इक्वेशन काढिया तो रिकरेंस इक्वेशन टा एति हो नोट लिखि दियो परे तमे बनै परिबो जे एटा होता रिकरेंस इक्वेशन जेहेतु एठी हम डिसेंडिंग सीरीज नौ छन माने कमुथुआ सीरीज माने हाईएस्ट पॉलिनोमियल रे k 0 पके जेतबेला हमें असेंडिंग सीरीज नउले तो बढुथिला सेतबेला हमें k 0 पकोथिले लोएस्ट पॉलिनोमियल रे एठी हम पके k 0 कोठे ना हाईएस्ट पॉलिनोमियल तो ताकू सॉल्व करले k 0 पकेले हमको इनिशियल इक्वेशन मिलता तो इनिशियल इक्वेशन आसीबो h2 हमें कहे 0 तो इनिशियल इक्वेशन को फुल सॉल्व करा पड़े एठी मते मिलिबो जो n रो दीटा वैल्यू मिलिबो इनिशियल इक्वेशन रे गोटे हला n आ गोटे हला -n + 1 ए दीटा इक्वेशन मिलिबो या माने यार जो सीरीज रो सॉल्यूशन हो से जो y = sum a y at m1 + b y at m2 जो भी m1 है एटा और m2 है एटा तो एठी जो आ यार जो सॉल्यूशन गुडा आसीबे से जेटा पॉलिनोमियल्स जो गुडा आसीबे ताको हमें कहला लेजेंडर पॉलिनोमियल तो नेक्स्ट सेशन रे हम देखिबा नेक्स्ट सेक्शन रे हम देखिया केमिति ए लेजेंडर पॉलिनोमियल्स सो एबे हमें कोन करिया ना हमें ए जो रिकरेंस इक्वेशन दा मिलिथिला हमको ताको हमें सॉल्व करिया सॉल्व करले हम एठी रिकरेंस इक्वेशन टा मिलिबा एठी m - k अछि एठी m - k - 2 अछि देखो माइनस k अछि या माने हमको जदी मते एका साइड चले आर अछि ताले एठी k टेंड्स टू आइदर हम पकेबी एठी k टेंड्स टू k + 2 नहले एठी पकेबी k टेंड्स टू k सॉरी k - 2 एठी पकेबी नहले एठी k टेंड्स टू k + 2 एना माइनस के चलछि हमको ए दीटा टर्म इक्वल करिया अछि जेंति माने कटि जिवे तो एठी हम कोन पकेबी ना k टेंड्स टू k + 2 एठी पकेबी एठी आ पकेबी जेतबे ताको सॉल्व करिबी तने मते गोटे रिलेशन मिलिबो ak + 2 और ak भीतर माने k तो 0 रु स्टार्ट होछि माने a2 और a0 भीतर मते रिलेशन मिलिला माने a1 केते हेला 0 ताले a3 भी a5 एगुडा सब 0 हे तो मते खाली इवन टर्म्स गुडा मिलिबो ताले यार जो सॉल्यूशन होबो से कोला हो ना हम कहथिले y = x टू द पावर n into a0 ak sum of ak x to the power -k एमना हमर सॉल्यूशन दिला तो एठी m = n थिला x टू द पावर n जगह 10 आइठे हमें m = n पुट करछे m = n से केस रे हमको मिलिबो x टू द पावर n a0
प्लस तापर तो a2x स्क्वायर a4x टू द पावर 4 एंड सो ऑन ये मिलो। तो एठी आपको मल्टीप्लाई कर सला पर हमको किछटा पॉलिनोमियल मिलियो जाको जार फर्स्ट टर्म दा कोई p0x सेकंड टर्म दा कोई p1x p3x p4x एंड सो ऑन। एबे जेतले तार रिलेशन बाहर करके इन टर्म्स ऑफ सीरीज तार पैटर्न मु बाहर करी सेतले मते मिलियो जे pnx -1 टू द पावर k 2n - 2k रो फैक्टोरियल बाय 2 to the power n k factorial n minus k factorial n minus 2k factorial। एबे नोट करो जे एठी n minus 2k जेतले 0 होबा या माने n इक्वल्स टू जेतले इवन अछि काने एटा त 2k ना 2 into something तो n इवन नहीं एटा 0 ही जो या माने k इक्वल्स टू केते जो से केस रे 1 by n by 2 तो k जेतले n by 2 हो केतले ना जेतले n इवन टर्म्स गुडा थिबे आ k केता हो n इक्वल्स टू minus 1 by 2 into n minus 1 कहना ये equals to 1 हेले कि 3 हेले कि कौन हेले हमको जानिए जे माने ऑड अछंती ऑड माने ये जो 1 by 2 into n minus 1 तो k रो एठी दीटा वैल्यू आसीबो इवन टर्म्स पई n by 2 अब ऑड टर्म्स पई minus 1 by 2 into n minus 1 1 by 2 into n minus 1 ऑड टर्म्स तो ए जो पॉलिनोमियल गुडा को पूरा हम ताको पैटर्न को गोटे सीरीज रे लिख देबी ए जो पॉलिनोमियल को कहबो लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स एटा है हमारा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स तो ଏବେ हमକୁ ଦେଖିବାର ଅଛି कोन ना ए लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स को किछिटा टर्म्स देखिବାର ଅଛି p0x p1x p2x p3x तापर हमें किछिटा नुवा नुवा फार्मूला देखिया जेमति कि रोड्रिगेज फार्मूला जोरा को मन रखि देले हमको p0 p1 p2 अब मन रखिया दरकार नै से फार्मूला को आइला गोटे जनरेटिंग फंक्शन देखिबा लेजेंड्रे पॉलिनोमियल्स रो तो नेक्स्ट सेशन रे हम अबिया जनरेटिंग फंक्शन देखिबे। तो प्रीवियस सेशन में हमें देखथिले जे y p0x p1x p2x pnx एमती मिलथिला होते या माने मैं आपको लिख परबी सम ऑफ pnx = sum of pnx n equals to 0 ix लिख दबा I equals to 0 to n। तो जेतबेले यार पैटर्न बाहर करिबी मु सब सॉल्यूशन बाहर करिकी तबे जेतबेले पैटर्न ता y रे बाहर करी तले मते pnx मिलिबो -1 to the power n 2n minus 2k रो फैक्टोरियल 2 to the power n k फैक्टोरियल एंड सो ऑन ए टर्म ता मिलिबो। नोटिस करो एठी x to the power n minus 2k अछि काना x to the power n ता मु मल्टीप्लाई करथिली काना एठी m equals to n थिला तो n ता मल्टीप्लाई करथिली तो एठी हमको n 0 पकेले n रो वैल्यू 0 पकेले हमको मिलियो p0x = 1 और p1x = x p2x एमती हाफ 3x स्क्वायर - 1 p3x हला 1 by 2 5x cube minus 3x एंड सो ऑन हमको बहुत सारा वैल्यूज मिली जो एठी तो याको मन रखिबा अपेक्षा जदी भी मन रखी तला हम कोन करिया ना रोड्रिगेज रो फार्मूला मन रखिया माने मन रखिया एटा बहुत इजी एटा कोन ना हमको जनरेट करिया जदी अछि p0x p1x p2x p3x तला हम कोन करिया ना ताको फार्मूला हिसाब रे जदी जिबा ताको हिसाब रे according to Rodriguez formula pnx = 1 by 2 to the power n factorial derivative nth derivative of x square minus 1 to the power n। so if we ताले धर्मते p0x बाहर करे अछि नेट p0x है लागते 1 तो p0x एठी हे जिवो ये माने n जगह में केते होबे 0 1 by 2 to the power 0 0 factorial d0 by dx to the power 0 x square minus 1 to the power 0 ये जो 1 काना सब तो 1 अछि 0 फैक्टोरियल केते 0 फैक्टोरियल 1 और ये तो माने या माने ही डेरिवेटिव होनी खाली x स्क्वायर माइनस 1 अछि तो ये इक्वल्स टू द पावर कोनी 0 तो इक्वल्स टू 1 तो मते p0x मिलिगला 1 सेमति हम काम आला तो मैं कोन करियो ना p1x तो 2 to the power 1 1 फैक्टोरियल थारे डेरिवेटिव करियो तो तुम मिलियो जे ये केते हिजो ना p1x मिलियो मते x सेमति p2x मते मिलियो p3x बाय रोड्रिगेज फार्मूला तो एटा कोन रोड्रिगेज फार्मूला कोन ना मोर टूल जोथि के हमें जनरेट करि करिए कोन p1x p0x p1x p2x p3x एला सब हमें जनरेट करि करिया तो इंस्टेड ऑफ ए सीरीज ता मन रखिया अपेक्षा जोटा मन रखले भलो मन रखिया अपेक्षा
हमें यदि रॉड्रिगेज फार्मूला मन रखिया ताने हमें एगुडा पाइबा किंतु इन जनरल इक्वेशन का हम मन रखिया ही पड़ो रॉड्रिगेज फार्मूला टा इजी सेमती हम को आउ केमिति पाई परिबा p0x p1x p2x ना जनरेटिंग फंक्शन रे तो को भी फंक्शन पाई जनरेटिंग फंक्शन होगा सम ऑफ z टू द पावर के fx जनरेटिंग फंक्शन कोन तो आगु को हम मु जदी पढिया भीतर जानि छी जनरेटिंग फंक्शन को हम कोन करू ना एवरेज वेरिएंस एगुडा सब बाहर करती मेनली मु स्टैटिस्टिकल ले पढती तो या को थरे डेरिवेटिव करी 1 जदी पकेबी ताले k f of k हे जिवो एटे तो ये एवरेज हो जाए तो छाड़ा एबे भाई जनरेटिंग फंक्शन मान रखो को भी फंक्शन भाई हमें लिखले हमें लिखिए z टू द पावर x ना k f of k ना k लिखते इस वाला एटी f of k है कहते ना pnx तो एटी z जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं जो z टू द पावर k pnx तो एटी z जेतबे मु 1 को के मतलब सम ऑफ pnx मिलियो तो ये गला हम pnx एटा मतलब सम ऑफ pnx मिलियो जो कि gz इज इक्वल टू या को जेतबे हम सॉल्व करिया हम मिलियो 1 by 1 minus 2zx plus z2 तो जेतबे हम 1 पके g equals to 1 एठी 1 पके हम को मिल जे सम ऑफ pnx सिंपली मते मिलियो 1 by 2 minus 2x प्लस हेला 2a प्लस हेला z equals to 1 पकेली तो 1 ये 2x ये 1 1 1 2 तो dx तो ये किछटा थिला हमर लेजेंडरी पॉलिनोमियल करे यार किछटा प्रॉपर्टीज अछि प्रॉपर्टीज कोन ना प्रॉपर्टीज जे देखिया तली पॉलिनोमियल गुडा सब ऑर्थोगोनल माने 90 डिग्रीज टू ईच अदर अछंती माने यदि हमें इंटीग्रेशन ऑफ pnx करिया ताहले हमको कोड भी ताहले हमको कम मिलियो ना 0 मिलियो जेतोर m not equals to n pnx into pmx integration of pnx into pmx dx ये हे जीवा 0 जेतोर m not equals to n जेतोर m equals to n होबा सेतोर किछ गोटे कांस्टेंट वैल्यू मिलबो रिपीटिंग फंक्शन लेखले हमको एठी गोटे कांस्टेंट मिल जाय थाला जोटा कि हम sin x और cos x रे फोरियर सीरीज रे देखि परिया एठी हमको पाई मिलियो कि 2 पाई मिलियो डिपेंड करे हम केते लेंथ मुचुंदी किंतु एठी pnx pmx करले मते 0 मिलियो जेते m not equals to n जेतो m equals to n हो सेतो मते किछ गोटे वैल्यू मिलियो किछ तो वैल्यू तो या प्रॉपर्टीज है माने कोन ना ऑर्थोगोनल इन नेचर आ जोठी कि p0x केते हबो ना 1 आ जो किछटा प्रॉपर्टीज अछि जेंति कि x to the power n plus 1 by n plus 1 sum of p n x is equal to तो ये जो half ln x plus 1 by x minus 1 तो ये गोटे प्रॉपर्टी अछि तार हमें रखिया पड़िबो एगुडा किछटा प्रॉपर्टी बाकी आउरी भी प्रॉपर्टीज अछि तार रिकरेंस फार्मूला भी गोटे अछि रिकरेंस फार्मूला नि जिवो इछि देखतो रिकरेंस फार्मूला टा हि जिवो p n minus 1 इनकी कुछ गोटे मल्टीप्लाई करो 2n minus 1 is equals to n plus 1 into p n plus something गोटे मल्टीप्लाई p n minus 1 किछ गोटे मल्टीप्लाई n minus 1 तो एगोटे किछ गोटे रिकरेंस फार्मूला भी तार अछि तो ताकू देखे देखि दबा सेही ए सब जिंस नै कि माने जनरेटिंग फंक्शन आउ रॉड्रिगेज फार्मूला को नै कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करिया तो नेक्स्ट क्लास रे हमें देखिबा किछटा क्वेश्चंस ऑन लेजेंडरी